Hello everyone, I'm Sudipta Simran Ponda, welcoming you all to Vedang classes powered by Vedang Institute of Technology and expecting you all ki preparation ठीक ठाक अपन मानकर चलिथियो, right? Ritesh, good evening. Gayatri, good evening. Prahlad, good evening. Vijay Lakshmi, good evening. Sanghamitra, pranam. Amit, very good evening. Everything is clear. Audio video सब perfectly आसुची मते बास ए गोटे जिंस कहि दियो. फोन तो एटी वाइब्रेट हो जीवन. Watch. Okay, चलो start करिबा class. So before that, just give me 1 minute. Pile class रे अच्छा. Pile. All clear ma'am, बुझिली सब clear, but पायल कौन करछि ना जी मोरो हाँ पायल अच्छी पायल आज मो माउस ऊपर नजर पकई देछि और मो माउस काम करूनी. That's the big deal. चलो एडजस्ट करिबा. स्क्रोल फॉर किछ होनी हो. ये क्या कर दिया पायल ने? वही तो मैं पूछ रही हूँ, ये पायल ने क्या कर दी? चलो तो ऑलरेडी ऑफर टाइम एंड हे सारी छी. आजिर क्वेश्चंस एंड आंसर जियोग्राफी जेहेतु सरी नी, जस्ट फिजिकल पार्ट किछि सरी थिला और किछि क्लाइमेट ऊपर अछि तो ताकू आज करिबा. रेस्ट बाकी किछि पोर्शंस आपनकर पॉलिटी पिला डिमांड करूचंती लाइक अलगा आर्ट एंड कल्चर ए सब स्टार्ट करिबा बट गोटे फेज करिकी. ओके पंडा मैम केमते अछन? मो पूरा पांडा भले अछि. क्लास करूची, क्लास कर सारी की पूरा गड्डी तड़ी सोई पडुची, पुणी उठुची, पुणी क्लास करूची, पुणी सोउची, जस्ट लाइक ए पांडा. त्या करछु माने एमिति क्लास मते देइचंती पूरा फुल्ली पैक. कोन तो मन को मो दुखर कथा कहिबी. दिन को 5-5 घंटा 5-5टा क्लास, नॉट 5 घंटा एक्चुअली 5टा क्लास 6 घंटा हे जाउची. बुझी पारथु आ दुख आसो. So all one examination रा आपण मानकर महात्याग प्राइस जोटा कि आपण मानकु कहिथिली 2999 नियो एबे 1000 टंका एक्स्ट्रा अछि. जदि भी नै परिया पैसा वाला पिला नै जिवे, सेतरे किछि नाही हैला. से ऑफर थिला जो मानकर टिके माने बीपीएल ग्रुप रे जो माने थिले से ऑफरटा से पिलांग पई हैला. धनी श्रेणी रा पिला माने अछंती से माने एई ऑफर रे भी नै परिबे. नो बट से स्टेटस मेंटेन करिया पई चाहिबे. आमे देखो बिना ऑफर रे नै छु एमिति पिला अछंती जो माने फ्रेंड सर्कल भीतर भी क्लास मेंटेन करंती है ना, तो से माने नहीं पारिबे. आराम से नियो, नो प्रॉब्लम. आसो तो कांस्टेबल भी नहीं पारिबे जदि स्पेसिफिकली आहुरी भी क्लास पिला अछंती जो माने महात्याग न नै कि ए सबु दिको गोटे गोटे करी किन देबे अछंती ना पिला. हां मोर बीपीएल टू भी गरीब. हां लुका सेटा मु जानि छी. चलो तो अगेन कहूची अधिकारी बैच
आसी जाइछि एंड अधिकारी बैच रे आपण माने पाइबे कोन ना ओसीएस प्री प्लस मेंस आपण माने पाउछन्ती एथिरे जहार प्राइस रहउची 6999 वैलिडिटी 1 ईयर एंड अधिकारी प्री प्लस मेंस आपण माने पाइ परिबे एटा ओनली प्री प्लस मेंस आपण माने 1.5 वर्ष वैलिडिटी सहित 11999 ने भी पाइ परिबे हैला नाहांती सोनल पे सेई क्लास रो गोटे आस मेंस बैच आपण माने नै परिबे मेंस 2024-25 पई 8999 एटा देखो 2024-25 पई सो दिस इज नॉट अधिकारी बैच होची ए दीटा प्री प्लस में माने प्री आ गोटे प्री प्लस मेंस देन आपण माने ऑप्शनल बैच भी नै परिबे 2024-25 पई वन ईयर वैलिडिटी 4999 apart from that those students are interested you can call to the office number and you can get the help over there okay aso the first question geography ऊपर ही अछि before that मु तमानु किछि बेसिक आईडिया दे देबी कारण बहुत पिला कंफ्यूज होंदी कि मैम ए जो एबीसीडी अछि लाइक बी अछि कि स्मॉल एस अछि एच अछि सब जिंसडा को हमें कोन कहबा ओके मैम आप रे टिके उत्कर्ष रे टाइम टेबल चेंज करई देबे टाइम टेबल आउ बापुन चेंज हे पारिबोनी रे बिकॉज़ ऑल द टीचर्स आर क्रुशियली पैक्ड हे अछंती तो से माने आउ खोटा भी नहीं पारिबेनी ओके तो जहा थिला जेमती थिला एटा ही थिला ताठो आउ किछि चेंज ही पारिबोनी आई एम सो सॉरी फॉर दैट हां so as per Koppen's climate classification most part of Odisha comes under which type climate BSH AW BSK and AF समस्तिंगर आंसर आसुतुबो AW that I know हैला बट केबे भाबी चकी जेबे जोटा कहिबी दैट इज वेरी इंपोर्टेंट केबे भाबी चकी लाइक आपण करो जेते बेले Koppen's climate को क्लासिफिकेशन करिथिले को अकॉर्डिंग करिथिले केमिति करिथिले ना फर्स्ट लेटर केमिति आपनकर थिला सपोज ए टा आपनकर देखंतु एठी बी टा कैपिटल अछि एस एंड एच स्मॉल अछि एठी ए कैपिटल अछि वेरएस डब्ल्यू स्मॉल अछि बट एमिति कोन पय केबे भाबिचो first letter tells you the main temperature or the moisture group that based on where it like sits relative to the equator that means equator को नै कि आपनकर मेन टेम्परेचर को मेन मापु थाए तो आकु हमें रिलेट करि परिबा फर्स्ट ऑफ ऑल जो ए बी सी डी ई केतटा ना फर्स्ट रहइबो ए देन रहइबो बी देन रहइबो सी देन रहइबो डी देन आपनकर रहइबो ई तो ये ए बी सी डी ई को हमें केमिति जानु छे ना ए को कहिले दैट मींस द ट्रॉपिकल ए कहूची माने ट्रॉपिकल दैट मींस ए हमर एठी अछि मींस ए ट्रॉपिकल आसीबो देन डब्ल्यू टा भी तुमको कहिबी रुह टिके व्यस्त होनी बी हेले कोन हबो ना बी आपनकर हबो ड्राई देन सी हेले कोन कहिबा ना एकु हमें कहूचे माइल्ड और हमें कहि परिबा दिस वन इज कोन टेम्परेट माइल्ड कहि परिबा और हमें एकु कोन ना टेम्परेट जोन बोली भी कहि पारुछे देन डी आपनकर आसीले डी फॉर कोन ना कॉन्टिनेंटल जोडा कि हॉट समर रे आपनकर देखा जाय थाए कोन ना कॉन्टिनेंटल हमें डिनोट करि परिबा एंड व्हाट ई स्टैंड्स फॉर द पोलर और द फ्रीजिंग जोन तो एते की रहउची ए बी सी डी ई जोडा कि आपनकर ए कैपिटल लेटर फर्स्ट पूरा शो करूची एटा आपनकर ए बी सी डी ई आकरी दैट्स इट एते की बुझी पारिलो को रीजन को कोन कुहा जीवो आई होप आपण माने क्लियर अछंती हना नै मते कुहंतु टिके ठीक तो तापर आपनकर पूरी थरे सेकंड लेटर आपनकर जो स्मॉल लेटर आसी जाउची सेटा कोथि पे करा हला ना सेटा रेन रो पैटर्न को नेकी आपनकर कोन ना टेम्परेचर ग्रेडियंट को नेकी को फॉरेस्ट को टाइप रो क्लाइमेट को हमें डिवाइड करि देले एठी आपनकर कोन ना जो स्मॉल लेटर आसीला एठी जो स्मॉल लेटर्स माने आसीले ए माननकु केमिति क्लासिफाई करा गला क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द रेन पैटर्न एठी कोन हे गला सी राइट ओवर हियर ना रेन पैटर्न को नेकी एठी अगेन चेंज आसीला तो जो स्मॉल लेटर्स गुडा अछि सेटा आपनकर को पर्यंत कोन कोन अछि एटा भी तो मन रहिदिबा दरकार आपनकर एफ अछि डब्ल्यू अछि एस अछि एम अछि हना नै मते को एस डब्ल्यू भी अछि तो जो एफ डब्ल्यू एस एम एम माने सब कोन एफ डब्ल्यू एस एम ए माने सब कोन हबो मते को एफ फॉर हमें कोन जानछे ना फुल दैट मींस कोन ना रेन ऑल ईयर राउंड हमें कहि परिबा मींस आपनकर टोटल ड्राई सीजन देखा ही जाए नाही दैट मींस कोन एफ फॉर हमें कहि परिबा द फुल माने आपण जानि परसंती ओवर ऑल द ईयर आपण मानकु रेन देखिबा को मिलिबो गुड इवनिंग बाको ओके
आफ्टर दैट हमें कहि परिबा जो स्मॉल w रहउची ताको हमें डिनोट करबा कोन ना ड्राई विंटर और हमें कहि परिबा द विंटर जते बेले आपनकर ड्राई रहिबो दैट इज कोन ना ड्राई विंटर दैट मींस हमें कहि परिबा कि इट रेन्स इन द समर बट विंटर्स आर ड्राई दिस इज कोठी हुए ना एटा ही आपनकर ओडिसा टाइप एटा आपनकर ओडिसा टाइप ओनली कोन ना आपनकर रेनी सीजन नहीं रेनी होबो लाइक सॉरी रेनी सीजन नहीं माने समर रे आपनकर रेनी हे जाउची आपण मा देखु संती खरा दिने भी अचानक आपनकर कोन वर्षा आसी जाउची होउची ना नहीं मते को सो एटा आपनकर w देखो a फॉर व्हाट ना ट्रॉपिकल w फॉर द विंटर ड्राई क्लियर सो AW टाइप होची ओडिसा रो टाइप आफ्टर दैट S कहिले कोन बुझिबो S कहिले कोन बुझो ना समर ड्राई दैट मींस इट रेन्स इन द विंटर बट समर्स आर ड्राई एटा आपनकर समर ड्राई रे पड़ेबो S जोटा कि नॉट अवेलेबल इन ओडिसा एंड ओडिसा रे आपण मानको देखा जायनी एंड एम रहि जाची एम फॉर व्हाट ना एम फॉर आपण माने जानि थिबे कोन ना मानसून एम फॉर व्हाट ना मानसून दैट मींस दैट इज वेरी हेवी सीजनल रेनफॉल हुए विथ अ शॉर्ट ड्राई सीजन जोटा कि बहुत ही रेयर देखिबा को मिले एंड आउ गोटे आपण को आसीबो SW दैट इज फॉर द ए SW टा कोठी के आसीबो ना ओनली फॉर बी एमिति आसीबो SW एटा कोथि पई ना बी पई खाली आसीबो What is B? ना ये आपनकर S आसीबो एक्चुअली रे S आसीबो because S is for ए जो S and W अछि S is for the steppe that means semi dry W is for the waste or desert हमें कहि परिबा that is very dry तो S for कोन लिखा हबो ना steppe आपण माने लिखि परिबे and W for कोन लिखि देबे ना आपनकर W for आपण माने जाय परिबे waste और आपण माने कोन waste और desert को बुझी परिबे either waste और आपण माने डेजर्ट एति की बुझी गले एटा आपनकर आ गोटे टाइप हमें कहि परिबा अगेन दिस इज नॉट एटा आपनकर टेंपरेचर वाइज गला सॉरी एटा आपनकर कोन ना टेंपरेचर वाइज एटा आपनकर रेन पैटर्न को नै की आहुरी आपनकर कोपेन क्लासिफिकेशन करचंदी ना हीट लेवल को नै की करिसंती जोटा हमें कोन कहते ना थर्ड लेटर आसे समहाउ देखो एठी आपनकर कोन तीनटा लेटर अछि एठी तीनटा लेटर अछि एठी सिना AW अछि एठी AF अछि तो तमे माने टेंपरेचर और रेन पैटर्न को नेकी कनेक्ट करि देलो बट जदी क्वेश्चन आसला तीनटा लेटर वाला सेठी कंफ्यूज हो मैम तो दीटा लेटर कहितले गोटे कैपिटल गोटे स्मॉल पुनी आ गोटे स्मॉल आसला कोठु सेटा आपनकर कहा को डिनोट करबा ना हीट लेवल को नेकी सेटा आपनकर हीट लेवल को नेकी डिनोट करबो हीट लेवल कहा को नेकी ना थर्ड स्मॉल लेटर ओके आउ डिटेल कहूनी अदरवाइज आपण मानको मुंडो घुरिबो फिर भी आपण मानकर H आसीबो K आसीबो A आसीबो B आसीबो C आसीबो हैला जोथरे के आपण माने कहि परिबे H फॉर द हॉट K फॉर कोल्ड एक्चुअली K फॉर C हेबा कथा बट K फॉर हमें कोल्ड नै जाय छै यूजुअली हमें कहि परिबा फॉर द कोल्ड डेजर्ट्स और द स्टिप्स ओके तापे हमें नै परिबा देन A फॉर आपनकर आसीबो हॉट समर देन B फॉर आपनकर आसीबो वार्म समर देन आपनकर रहिला कोन सॉरी C रहिला B C A हां C रहिला C फॉर आपण माने कहबे कूल बट एटा शॉर्ट कोन बहुत ही शॉर्ट समर पीरियड पई कूल पीरियड हम आस परबो बट हमें कहि परिबा व्हाई इज दिस यूज्ड कोथि पई हमें ताको यूज करू छे वैरायटी आपण माने जानि छथि AW जते बेले ऑप्शन आसुची दैट मींस हम माने कोन कहूचे ना ट्रॉपिकल सावन्ना ही जाउची नेचर दैट मींस हॉट ईयर राउंड विथ द कोन ना डिस्टिंक्ट ड्राई विंटर भी हमर देखा जाउची जोटा कि ओडिसा रे देखा जाय कोन नै मते को एंड विथ दैट हमें कहि परिबा मोस्ट रेनफॉल आपनकर हुए आइदर मानसून सीजन में नहले आपनकर समर सीजन में भी आसी जाय बट मोस्ट ऑफ द ओडिसा पेनिनसुलर इंडिया में कहि परिबा दैट इज अकर्ड इन द AW रीजन एंड जदि हमें BSH देखुचे एठी आपनकर ऑप्शन अछि देखो BSH तो BSH देखले कोन कहूचे ना दिस इज द हॉट सेमी एरिड दैट मींस ड्राई क्लाइमेट हेतिबो व्हेन हमें कहि परिबा द एवापोरेट्स माने बहुत स्पीड हे परिबो माने एवापोरेट हे कि एक्सीड करि परिबो रेन को मींस वेरी हॉट टेंपरेचर हेतिबो जोटा कि आपण माने कहि परिबे एटा को जगह रे देखा जाय ना ई आपनकर राजस्थान रे देखासिबो जदि राजस्थान रो क्लाइमेट पछरिबो ताहले BSH जेम कि ओडिसा रो AW सेंति BSH आसीबो अच्छा से जो थर्ड लेटर आपण मानु कहली कहा को नै कि ना हॉट जो हीट लेवल को नै कि तो हीट को जगह रे अधिक आसे राजस्थान रे अधिक आसे तो ऑटोमेटिकली BSH को आपण माने कहा सहित रिलेट करिवे ना राजस्थान सहित रिलेट करेबे एति की बुझी पारलो ना नाही मते खाली कह यस और नो रे आंसर दियो देन आपण मानकर आउ गोटे ऑप्शन अछि कोन ना BSK आपण मानु कहि दिली कोन तीनटा लेटर अछि माने हीट लेवल को नै कि आइदर हीट अधिक थिबो नले हीट कम थिबो ह ना नै को
yes or no रे मते आंसर दियो एंड केयरफुली टिके सुनो बिकॉज़ एटा आपण मानकु कांसेप्ट बुझौची बिकॉज़ बहुत पिला आपण माने कोपेन्स कोन थ्योरी देथिले एथिरे माइंड आपनकर पसे नाही सेति पई मु कहूची एल्स मोर किछि एनर्जी लॉस करिवारे पॉइंट एठी नाही ओके आसो तो कौन कहछि ना बीएसके मींस कोन ना ये कोल्ड एंड सेमी अराइड रहिबो दैट मींस ये ड्राई एंड आपण मानकर स्टेप्स क्लाइमेट रहिबो बट with the cold winter आपण माने को रहिबो दैट मींस एवरेज हमें कहि परिबा टेम्परेचर केते रहिबो ना 18 डिग्री सेल्सियस और माने ताठो अवरी कम रहि परिबो दैट इज द पार्ट ऑफ आपण माने कहि परिबे गोटे राजस्थान हेले आ गोटे तार अपर एरिया में कोन मरुभूमि लद्दाख रे भी तो अछि ना तो हमें लद्दाख रीजन सहित काम करि परिबा बिकॉज़ ऑफ द हाई अल्टीट्यूड कोन ना हाई अल्टीट्यूड पेन पई एठी आपण माने बीएसके आसिले कहा को नेबे ना लद्दाख को नै परिबे यस और नो बुझी पारलो ना नहीं मते कुओ बाकी एस आसिले कोन हबो ना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एटा कोन रहिला ए आपनकर रहि गेला ट्रॉपिकल एस आपनकर कोन रहिला फुल माने कोन ना होल ईयर आपनकर रेन होथुबो दैट मींस कोन ना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्लियर एमिति रिलेट करी कि बुझी पारिबो टोटल टाकू नोट टाकू लिखि दबो कोउटा कहा अकॉर्डिंग हेला आ गोटे क्लास रे या फिर आ गोटे जदी ऑप्शन आसीबो बुझेबा पई मु सेटा तुमको हीट लेवल टा लिखै देबी सेटा को त माने मैच करै द एते कि बुझिलो क्रिस्टल क्लियर और को जगह डाउट रही मते खाली को डाउट नहीं कोठी डाउट नहीं जदि बी आसिला सपोज कैपिटल बी लिखिथिबो ताहाले बुझिबो रिवर्स को रिलोट करिके आपण माने कहिबे सी लिखिले डेजर्ट को करिके कहिबे आज पर आपण माने कहि परिबे माने बेसिकली जदि बुझिबा पई कि सब बेले तळु ऊपर को आपण माने जिबे कोन ना आपण माने कर हॉट एरिया रो कोल्ड एरिया पर्यंत आपण माने जिबे एति कि जिंस बुझिस ना कोठी किछि डाउट रहिला मते कुह टिके जिबा आगु को धर चलो बहुत टाइम पळेला त माने कोन बुझिछ भगवान को जणा आसो according to the Koppen's climate classification most of the Odisha comes under the AW type of climate which is also known as the tropical savanna climate crystal clear chalo next mate ko which factor greatly influences the weather in Odisha due to its proximity कोन रहिबो को क्लाइमेट आपनकर इन्फ्लुएंस करूची एनीवन को मते कोन कहबो माउंटेन रिवर्स डेजर्ट और सी माउंटेन सी डेजर्ट कोन होची राइट आंसर देखा कोन केते पिला कर राइट आंसर आसुची ऑप्शन सब कोन दोचो सब सी सब के बी दोचंदी के सी दोचंदी आइदर बी दियो नले डी दियो सी टा लिखुछ माने कोन खोजिबी को ऑप्शन में सी अछि बोली सो राइट आंसर आपन कोन हबो ना ऑप्शन डी दैट मींस द सी व्हाई बिकॉज़ हमें जानि छे सी आपन कर रहउची मानसून एरिया रे and हमें कह परबे द प्राइमरी डिपेंड अपॉन द रिवर that provide the moisture for the monsoons that we know regulate करे temperature को that means humidity को and is the birthplace of the frequent cyclones that is the sea level मैम आ रिप्लाई दो ना दी मैम पाठ पढेबे ना गोटे गोटे मेसेज रे रिप्लाई देबे मते खाली कहि दियो किया हेली गोटे गोटे मेसेज रे रिप्लाई देबी 5 मिनिट 10 मिनिट जाऊ अध घंटे गप्पीबी 10 मिनिट पढेबी चलिबो तापरे मैम भल लागिबे को तापरे मैम भल लागिबे तो ता परे भी तमे मैम को क्लास को आसीबो तो बोले आसो किछि भी कोनी आसो तो माउंटेन्स आसिला रिवर्स आसिला हमें कहूचे माउंटेन्स आपनकर कोथि आसीबो ना सेकेंडरी ड्राइवर रे आसीबो हरी प्राइमरी ड्राइवर रे आपनकर किए ना सी आसीबो क्लियर चलो So Odisha is the state located on the eastern coast of India and has a significant coastline along the Bay of Bengal, the large water body of the sea. Specifically, the Bay of Bengal has a major moderating influence on the region's weather and climate. Obviously, अपन कर cyclone का आरंभ करी everything rain pattern change because of the having the Bay of Bengal in our east side. है ना? चलो. Next मते कुहा as per discuss करन तो मैम हाँ लंबोदर आसा as per अरे बा आ गोटे बढ़िया जिनसटा आसिला या पर टिके जानिबेनी खुआ मते तमन को कोपेन्स का विषय रे कहिली बट तम माने जदी कहबो एबे कोन ना थॉर्नथ्वाइट को विषय रे कहिबी नाही ताहाले त माने अंको क्लाइमेट और कोपेन को क्लाइमेट भीतर डिफरेंस केमती क्रिएट करिवो जानिबा तो दरकार एटलीस्ट कोन दिजन जाको टेंपरेचर विषय रे या फिर क्लाइमेट विषय रे रेन पैटर्न विषय रे हॉट ऊपर माने हीट एब्जॉर्प्शन ऊपर डिफरेंट मतामत दैचंती
मैम आपनकर जीके जीएस बुक अछि कि नाही मनोज बाबू नाही एबे तो नाही आगु को आसीबो आसो तो कौन कहूची ना वेट टेम्परेट वेरी ड्राई सब ह्यूमिड आगो तो मैंने आंसर दे दिया तापर हम आगु बुझिबा दैट इज डी हैला सब ह्यूमिड तो दीटा जिंस मन रखो एडब्ल्यू गोटे सब ह्यूमिड गोटे जदी कोपेन्स अकॉर्डिंग पचला एडब्ल्यू जदी आपन को पचरा गला थॉर्नथवाइट का अकॉर्डिंग ताहाले आपन माने कहि परिबे दैट इज सब ह्यूमिड बट मते एठी कुह व्हाट इज द थॉर्नथवाइट्स क्लासिफिकेशन इज व्हाइल हमें कहि परिबा कोपेन क्लासिफिकेशन आपनकर कोन करूची ना व्हिच आपनकर माने बार बार एग्जाम रे उटा पचारुची दैट फोकसेस मोस्टली ऑन द टेम्परेचर एंड द रेनफॉल ऊपर हां नै मते को बट एटी थॉर्नथवाइट कोन करिथिले ही वाज एन अमेरिकन आपनकर क्लाइमेटोलॉजिस्ट एंड सी आपनकर कोन करथिले ना लुक्ड एट द वाटर बैलेंस ऊपर बुझिस नो घुरिस पूरा क्लियर आसिस घुरा घुरी किछि नहीं क्लियर सब अछि हैला तो मते को सी कहा परे ना आपनकर रेन माने वाटर मॉइस्चर केते रही जाईची वाटर बैलेंस ऊपर से नै की क्लाइमेट को डिफरेंशिएट करिथिले फॉर एग्जांपल मु कहूची लाइक नॉट एन एग्जांपल एक्चुअली दैट स्टेटमेंट इज ही बिलीव्ड इन द क्लाइमेट इज नॉट जस्ट अबाउट हाउ मच रेन फॉल्स बट हाउ मच वाटर is actually available for the plants after the some of its evaporates तो evaporation पर हमें कहि परिबा केति की अवशिष्टांश वाटर मॉलिक्यूल्स हैला वाटर पार्टिकल्स हैला ए माने रही छथि प्लांट भीतर प्लांट रे अब्जॉर्ब करिबा लागि ता अकॉर्डिंग से क्लाइमेट को आपनकर डिफरेंशिएट करिथिले तो सिंपल आईडिया रे जति हमें ताकू कहिबा ना थॉर्नथवाइट आपनकर कोन करथिले ना सिस्टम टू टाइप्स रे सॉरी थ्री टाइप्स एक्चुअली रे बनेथिले नो टू टाइप्स एक्चुअली फर्स्ट कोन ना प्रेसिपिटेशन जोटा कि इफेक्टिवनेस ताकू हमर कोन कहै दछि ना पीई जो टू टाइप्स आपन कर रहुची वन इज द पीई दैट इज कोन प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस अनदर इज कोन ना थर्मल एफिशिएंसी दैट इज टीई precipitation effectiveness and another is the thermal efficiency the total two types re divide करसन तो precipitation effectiveness रे कोन कहिसंती ना in that it measures how effective the rain is and if it rains in a very hot place ताहाले आपनकर water evaporate quickly होची and it doesn't help the plant that much कोन actually रे plant को जति की require थाए सेति की help करि पारुनी that is about for ना अपन कहि परिबा ना डेजर्ट कंडीशन दैट मींस वेरी हॉट क्लाइमेट हॉट कंडीशन एंड टीई जोटा कहले अपन को थर्मल एफिशिएंसी कोन कहूची ना दैट मेजर्स हाउ मच हीट इज अवेलेबल फॉर द प्लांट ग्रोथ ऑन एंड एवरेज मींस आपनकर प्लांट जनरली ग्रो करिबा लागि केति की अवेलेबिलिटी वाटर रहिची मॉलिक्यूल्स रहिची आफ्टर द इवापोरेशन सेटा आपनकर डिसाइड करछि दिस मींस मु कहि दोची ऑन एंड एवरेज ग्रोथ ऑफ प्लांट्स ये सन्नो एतिग्रु त माने बुझी परिबो आ गोटे जिंस कोन कहूची ना द पोटेंशियल एवोपराइजेशन कोन कहूची ना माने पडुनी एक्चुअल बाटा छाडी दियो ताको तो टोटल टू टाइप्स रे मन रखा आ गोटे पीईटी अछि बट तार फुल फॉर्म ता मन पडुनी जोटा कि आपन कर रिवाइजन हे जाय छै एक्चुअल 1948 फॉर ए मन पडले कहबी बट एज ऑफ नाउ तो माने दीटा ही मन रखिता तो कोपेन आपन कर कोन करथिले ना एडब्ल्यू करिथिले दैट इज द ट्रॉपिकल साबना टाइप मेन फोकस कहा पर थिला ना टेंपरेचर एंड रेनफॉल ऊपर तार टोटल जिंसटा थिला बाकी आपन थॉर्नथवाइट कोन करिथिले ना सब ह्यूमिड एंड तार मेन फोकस कोन थिला ना वाटर बैलेंस एंड द प्लांट रो ग्रोथ पर एति की दीटा जिंस आपन को जते बेले पचारिबो एग्जाम रे होप आपन माने या पर टू क्लियर डायरेक्ट आंसर देबे ओके चल सो एज पर द थॉर्नथवाइट क्लास हां गला नेक्स्ट वो मते व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीजन्स डच ओडिसा नॉट एक्सपीरियंस ओडिसा रे ए सीजन ता में के एक्सपीरियंस करूनी एमिति रे सीजन अछि जोटा के हम एक्सपीरियंस करूनी कहिलो देखि कोटा समर स्प्रिंग मानसून और नॉटिस को मते गवर्नमेंट ऑप्शन को जीवो की समर आपनकर एक्सपीरियंस होउछि ना नाही मते को मार्च जून रे भयानक जदि हमें कहि परिबे कोटा बेसी एक्सपीरियंस करूचे दैट इज द समर हन नाही मते को यस और नो इवन मानसून भी हम एक्सपीरियंस करूचे बट हम एक्सपीरियंस करूने कोन ना नॉन ऑफ दीज
कौन एक्सपीरियंस करूने नन ऑफ दिस ऑप्शन टा देखा जाउनी ना कि नन ऑफ दिस कोड मैम एथरे देबे अलग किछि देई परिबे ना स्प्रिंग टा हम एक्सपीरियंस कोठी करूचे खरा वर्षा शीत रे तो पड़ोची स्प्रिंग हम एक्सपीरियंस ही केते बेले कले हुआ टिके मैम कमेंट टिके देखंतु शुभस्मिता धळ मारे टिके रही जा लास्ट को आम एंड रे मु 10 मिनिट पूरा 10 मिनिट देबी आफ्टर 11 मु 10 मिनिट देबी सेबे तो मानकर कमेंट जहां भी अछि सब क्वेरी सॉल्व करबी बट एबे टिके पढारू ब्रेक हे जाउछ हैला चल नेक्स्ट मते को व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट डज ओडिशा एंजॉय करूछ एक्चुअली को टाइप रो क्लाइमेट पीटी ट्रांसपिरेशन आई रे एक्चुअली ने मने पडुनी तार फुल फॉर्म टा एक्चुअली मने पडुनी फुल फॉर्म टा कहिबी त मन को नेक्स्ट क्लास रे चेक करके कहिबी एबे पई मने नै सॉरी फॉर दैट आसो तो राइट आंसर कोन अछि व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट डज ओडिशा एंजॉय करे को टाइप रो क्लाइमेट एबे हमें डिस्कस करूचे को टाइप रो क्लाइमेट ऊपर मते को टाइप रो क्लाइमेट आसीबो potential evapotranspiration yes that is the ha thank you Vivek potential evapotranspiration yes that is the PET method yes that is another method जोटा कि अपन को Thornthwaite discover करिथिले but still एटा एति कि अपन को 1948 रे सेटा रिवाइज हे जाइथिला हैला आसो नेक्स्ट क्वेश्चन मते को राइट आंसर कोन हबो अपन को एज यूजुअल ट्रॉपिकल ऑब्वियसली अपन को आउ तो किछि भाबिबा को नै ट्रॉपिकल ही अपन को हबो because we all know the tropical अपन को कोन करछि ना this is found in the region between the tropic of Cancer and the tropic of Capricorn so India अपन को कोठ रहउछि tropic of Cancer and tropic of Capricorn भितर अपन को हमर कोन ना belong करिवो that is the tropic of Cancer and Capricorn is that clear tropical dry deciduous forest is the Odisha forest type very good jiba but why Odisha because Odisha is located south of the tropic of Cancer and it is climate is defined by the high temperature year whole around clear next chalo mate kuha oops sorry right answer Odisha enjoys the tropical monsoon characteristics clear acha statement based question achi hope you will like that huwa consider the following about the climate of Odisha Odisha ra climate ko jodi ame consider kariba it is proximity to the sea definitely its elevation its latitude jodi total ko ame calculate kari deba e sabuti ko full package of Odisha ra climate so 1 2 and 3 को ame माने डायरेक्टली चूज करि परिबा yes or no रे मते को डायरेक्टली हमें चूज करि परिबा कि 1 2 and 3 को टेल मी yes or no because tropical monsoon amara rahuchi the Odisha ra climate and is shaped by the three geographical factors apankar proximity to the sea and apankar because of the Bay of Bengal even the elevation apankar eastern ghat apankar achi that's why ame kahi pariba that is because of the elevation hone nei ko so relate kari pariba yes 3b achi ha 3b achi okay chalo next mate kahibo so d everything मते को इन ओडिशा द समर सीजन टिपिकली स्टार्ट्स इन व्हिच मंथ ओडिशा रे आपनकर समर सीजन केबे स्टार्ट होची ओडिशा रे आपनकर समर सीजन को मंथ एक्चुअली रे स्टार्ट हे जाउची मते किए कहि परिबो क्विक अकॉर्डिंग टू द मेट्रोलॉजिकल लाइक स्टडी मेट्रोलॉजिस्ट मानक अकॉर्डिंग मते कुह व्हाट विल बी द राइट आंसर स्टार्ट द समर सीजन इन ओडिशा बाय द मार्च फेब्रुअरी तो ऑप्शन नाही आपण माने काहे की अप्रैल काहे की मारुचो कि से अप्रैल मारुची मते फेब्रुअरी बेले को गरम होची फेब्रुअरी बेले को गरम होची रही होनी तो माने कर मार्च केमती जो अप्रैल केमती जाउची आसो so in Odisha the summer season typically starts in the March the summer month usually span from the March through June with April and May being the hardest okay chalo next mate ko which month is the hottest in Odisha Odisha re ebe कहली सबटु hottest month पचले आपण माने कोन कहिबे the hottest month in the month I born that is the May okay that is the May is consistently is the hottest month across the state for several reasons because of what ame कहि परिबा for the peak कोन solar radiation that is the main reason even the dry आपनकर dry winds आसे that is the reason आमे कहि परबे द प्री मानसून ह्यूमिडिटी आसी जाय लाइक व्हाइल जून इज आल्सो द हॉट आमे कहि परबा बट प्री मानसून आपनकर मेरु आसी जाय दैट्स व्हाई आमे ताकू कहि परबा कि दैट इज द आपनकर हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर इन ओडिशा दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग ओके
आफ्टर दैट मते कुह या नेक्स्ट मते को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा एक्सपीरियंसेस द हाई टेंपरेचर ड्यूरिंग द समर सीजन को जिला आपनकर रहुची जे कि ओडिशा रे क्विकली मते कुह व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा एक्सपीरियंसेस द हाई टेंपरेचर ड्यूरिंग द समर सीजन को डिस्ट्रिक्ट को हमें रिलेट करिबा सुंदरगढ़ संबलपुर बरगढ़ गवर्नमेंट ऑप्शन अछि ता काहे की जीव सबु हैला सबु को रिलेट कर देबा बिकॉज़ ऑफ कोन ना दीज आर द इनलैंड आमे इनलैंड डिस्ट्रिक्ट गुडा को ही रिलेट करिबा कोस्टल डिस्ट्रिक्ट आपनकर हबो नै बिकॉज़ द इनलैंड डिस्ट्रिक्ट्स आर वेरी फार फ्रॉम द कूलिंग इफेक्ट ऑफ द सी तो सी पाखो एरिया आपनकर जति जल्दी हीट हुए सेते जल्दी कूल डाउन भी हे जाय सो पाखा पाखी कोस्टल एरियाज को हम एलिमिनेट करके इनलैंड गुडा को टिटला कर कथा काहे आ कहउछ बाघ आसा तो नेक्स्ट बा व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द रेनी मानसून सीजन इन ओडिशा ओडिसा रा ड्यूरेशन केते मते कहिलो मैम पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन क्या हुआ सुभोत्ता 111 what happened I will discuss about that बच्चा I will discuss don't worry को मते यार आंसर ता दियो what is the duration actually रे आपनकर ड्यूरेशन केते रुहे मते कुआ obviously आपनकर जुलाई टू मिड ऑफ अक्टोबर जाय आपनकर रुहे हना नै जुलाई टू मिड ऑफ अक्टोबर जाय आपनकर रुहे द साउथ वेस्ट मानसून जेते बेले आपनकर आसे इन द कोन लाइवलीहुड भीतर आपनकर ओडिसा रा कोस्टल एरिया को आपनकर कोस्टल एग्रीकल्चर को आपनकर हिट करे आमे कहि परिबा फास्ट ऑनसेट आपनकर जून रे स्टार्ट हुए पीक आपनकर मिड ऑफ जुलाई रो सितंबर आपनकर 80 माने 80% ऑफ एनुअल रेनफॉल आपनकर कोन ना बिटवीन द जुलाई एंड आपनकर सितंबर भीतर हे ही जाय हना नै मते कुआ यस ही इज लैगिंग बिहाइंड हाउ विवेक जस्ट पुल हिम फॉरवर्ड आसा नेक्स्ट अगेन कहि दोछि तम मानकू महाटैक रा प्राइस आपण माने जेतु नेलेनी सती पई प्राइस राइज हे जाय छि बट स्टिल दिस इज नॉट अ बिग गैप आपण मान बैच एनरोल करि परिबे वन डे रो एग्जामिनेशन जेते अछि सब आपण मानकर एथरे कवर अप हे जिवो हैला आफ्टर जदि आपण माने अधिकारी बैच नेबा को चाहुचंती ताहाले ओसीएसटी प्लस मेंस आपण मान नै परिबे जोटा की वैलिडिटी 1.5 वर्ष रहिबो प्राइस 11999 अपार्ट फ्रॉम दैट जदि आपण माने प्री ओनली प्रेफर करूछंती ताहाले भी नै परिबे 1 ईयर वैलिडिटी सहित 6999 ओनली ओके you forgot that's why I'm telling you no subhata I didn't forget that don't worry end रे मु डिस्कस करिबे जदि मोर सेटा मते विवेक कहि देथिले त फुल फॉर्म ता जदि मने पकोछ थैंक्स बट विवेक मते को मने पके देथिले आसो मते को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस इन ओडिशा एक्सपीरियंस हाई मानसून रेनफॉल को रीजन रे आपनकर ओडिशा एक्सपीरियंस करूची हाई रेनफॉल कहिलो मते रीजंस ऑफ हाई मानसून रेनफॉल कोन रहिबो नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट ओडिशा नॉर्थ ईस्ट ना साउथ एंड साउथ ईस्ट ओडिशा बोथ ऑफ द एबव हां बोथ ऑफ द एबव को हम रिलेट करै पारिबा बोथ ऑफ द एबव को हमें रिलेट करै पारिबा कारण नॉर्थ ईस्ट त आपनकर कोस्टल जोन रहि गला नॉर्थ रे बालेश्वर लाइन तो सेपटे भी आपण जो रिलेट करि परिबे इवन साउथ रे भी आपण रिलेट करै परिबे हैला नॉर्थ ईस्ट हेले आपण मान जानि छथि मयूरभंज जिला केउंझर हेला से रीजन को रिलेट करै परिबे एंड आपण मान जानि छथि साउथ एंड साउथ वेस्ट रे बिकॉज़ ऑफ द ओरोग्राफिक जोन आपनकर बिलोंग रहउची द लार्जली ओरोग्राफिक जोन द हाई रेनफॉल हियर बिकॉज़ ऑफ द ओरोग्राफिक जोन सो दैट्स व्हाई ताकू भी रिलेट करै परिबा ओके नॉर्थ ईस्ट लघुचाप मड खाइस सब बले हां आज्ञा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मते कहू ड्यूरिंग व्हिच मंथ डज ओडिशा यूजुअली एक्सपीरियंस ड्यूरिंग व्हिच मंथ डज ओडिशा यूजुअली एक्सपीरियंस द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल तो को मंथ रे आपण मानको एबे ही कहितली को मंथ आसीबो जदी हाईएस्ट रेनफॉल आपण कर यूजुअली एक्सपीरियंस करूची बिटवीन द जुलाई टू अगस्त yes or no between the July to August किछि explanation दरकार की मते कुह because of the monsoon आपनकर arrive करिसा in the June आपनकर it takes a few week to cover the entire state so entire state cover कला भीतर आपनकर कोन highest आसी जे automatically July to August भीतर there is no an extra explanation you needed okay next so Odisha receive most of its rainfall from the southwest monsoon next mate ko what is the average annual rainfall in Odisha during the rainy season according to the Odisha economic survey 2022-23 according mate कहलो economic survey of India माने sorry economic survey of Odisha 22-23 report according मते कह कोटा पर राइट आंसर
What will be the right one? 145 सेंटीमीटर. ओके ताकू कोन लॉक करी देबी तो पक्का पक्का वेरी गुड चलो सो केते रहउची ना 145 सेंटीमीटर. So the average annual rainfall in Odisha during the rainy season is approximately 145 centimeter. Next, किए से D मारुची काहेकि D मारुछ रितेश कोथि पाई मैम स्क्रीन ब्लर आसुची कोन करली रे लॉक तो करिथिली देखिलो चेक कलो आसिला उथरे कहिबो को मते. Next question को what is the range of rainfall variability in the south and southwestern parts of Odisha during the monsoon season? Monsoon season रे आपण कर कोन variability रहिबो को that is 5 to 10%, 10 to 15%, 15 to 20%, 20 to 25%. केते रहिबो variability? Obviously आपण कर केते रहिबो quick 15. See, very good. Rainfall availability, sorry, variability आपनकर केते रहइबो refers to how much the actual rainfall कोन ना आपनकर deviates करे from the average सेटा को हमें belong करिबा. Suppose south and southwest like western रे आपण माने कहबे 15 to 15 to 20% आपनकर रहउची. So on and average हम कहिबा that is 15 to 20%. हैला चलो next question mate ko which of the following natural disaster is common in Odisha during the rainy season. The natural disaster to common apankar rainy season re pacharichi. Look what the question is demanding, according to that just give the answer. Apanku pacharichi the common natural disaster in the rainy season. Yes, that can be the both. So both cyclone and both A and C ha both cyclone and flood कहि परिबा. टोर्नाडो हमर ओडिसा रे आसे नाही. Is that clear? Both आपनकर flood आसे and हमर cyclone आसी जाए. Clear तो किछ explanation दरकार देखो cyclone हैला flood हैला आपण माने जानते अक्टोबर नवंबर रे तो definitely आसे. That's the favorite month of the like cyclone ओडिसा को hit करिबा. Okay, next. So what is the average relative humidity in the coastal region of Odisha during the monsoon season मते कहिलो average कहा को हमें कहि परिबा क्विकली को जल्दी जल्दी को अरे बहुत बहुत सारा क्वेश्चन अछि जल्दी को विवेक कोन लिखिजो एक नेम पेट्टो यात्रा आसो मते को व्हाट इज द एवरेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन द एवरेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहि देला माने ऑप्शन डी को आसरे 80% को आसो हां ठीक अछि सो द एवरेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन द कोस्टल रीजन ऑफ ओडिशा ड्यूरिंग द मानसून सीजन इज 80%. व्हाई 80% आपण माने जानिबे बिकॉज़ प्रोक्सिमिटी टू द बे ऑफ बंगाल दैट एन्श्योर्स दैट द कोस्टल डिस्ट्रिक्ट आपनकर केते रहइबो गंजाम हैला बालेश्वर हैला एवरीथिंग जगतसिंहपुर हैला पुरी हैला ए सब आपनकर वेरी ह्यूमिड like categories रे पड़े आसीबे. During the monsoon the air is nearly हमें कहि परिबा very saturated with lots of moisture आपनकर फुल हेकी थाए. So often हमें कहि परिबा 80% पर्यंत humidity आपनकर contain भी करे. Okay चलो next question. In which district of Odisha does the high annual rainfall region in the northern part predominantly lie? Quickly कहिलो कौन कहूची right answer? Is that Bargad and Jharsuguda? Answer के को रीजन अच्छा मते कुआ मैम मयूरभंज बी की मतलब हाँ मयूरभंज नहीं ओनली बालेश्वर अछि मयूरभंज नहीं इन द कोस्टल रीजन. ओके पंडा बाबू बुझिस आसो तो मते को द हाई रेनफॉल रीजन इन द नॉर्दर्न ओडिशा that is the मयूरभंज एंड वेस्टर्न केउंझर को हमें रिलेट करे परिबा जे कि हाई एनुअल रेनफॉल एक्सपीरियंस करे. ओके आम एरिया हाँ तम एरिया आई एम फ्रॉम कलाहांडी मैम सोनल बेहेरा हाँ आई थिंक यू आर एक्चुअली फ्रॉम कलाहांडी. चलो राइट आंसर मते को व्हिच जियोग्राफिकल फॉर्मेशन characterizes the high annual rainfall region in south east Odisha कोटा का में रिलेट करे परिबा क्विक
high rainfall region of the southeast Odisha, that means कौन obviously आपनकर plateau जीवा valley delta coastal plain तो बिल्कुल जीवनी काहे कि plateau जीवा because southern western जेते बेले high rainfall experience करे the zone is characterized by the eastern Ghat plateau होना नहीं including हमें कहि परिबा आपनकर कंधमाल हेला कोठी अरे सोनल तम घर एक्चुअली कंधमाल बोली मु भाबुथिली कंधमाल हेला कोरापुट हेला ए रीजन को हमें रिलेट करे पारिबा क्लियर एंड these elevated plateaus act as a barrier भले से आपनकर काम करे that cooling the monsoon wind and causing the heavy precipitation very fastly okay why not coastal plains देखो coastal plain आपनकर as a barrier किछि न थाए तो सब जिनस प्लेन ही थाए सपोज आपण माने कहि परिबे किछि गोटे रेनफॉल आपनकर आसुची से तो कोस्टल प्लेन सहित मिसी जीवो प्लेन वर्षा हैला से पुनी पसी जीवो बट रही परिबो कि गैदर हे कि गोटे जागा रे हमें रेन टाको अटके कि रखि परिबे कि दैट कैन पॉसिबल इन द हिली एरियाज ओनली दैट इज इन द कोरापुट कंधमाल इन दैट रीजन ओके से जागा रे हमें रिलेट करि परिबा हां बाघ आई थिंक नरसिंहपुर मते लागुची अच्छा. So the high rainfall region in southeast Odisha, particularly the eastern Ghat highlands, because of the eastern Ghat present in that area, we relate करी पारी. ठीक है चलो. Next में देखो what is responsible for the high annual rainfall in the northern Odisha region? एटा कोथि पाई responsible होउची? Regular monsoon pattern पाई, cyclone during the monsoon season पाई, elevated terrain पाई, या फिर proximity to the equator. कोटा हवा मते कहिलो? Main reason in the high rainfall in the northern Odisha. जल्दी कुआ क्विक दैट इज नो बी केमती हबो काहे कि बी हबो मते को साइक्लोन ड्यूरिंग द मानसून सीजन ता पय आपनकर नॉर्दर्न रे हुए सेति पे हमें रिलेट करि परिबा या फिर द रेगुलर मानसून पैटर्न पे हमें कहि परिबा while we know the terrain that helps in the consistency of the rainfall in the northern Odisha that is a primary due to the na regularity actually आपनकर कोथि पय हुए ना because of the terrains होना नहीं मते को त टेरेन आपनकर हेल्प करी कि रखे बिकॉज़ ऑफ हैविंग द स्लोप एरिया तो आपनकर गोटे गोटे जगह रे फिक्स हेगी किछि वाटर स्टॉक करी कि रखंती एंड एटा कोथि पय जदी रेगुलर आपनकर मानसून पैटर्न नो आसिला ताहाले एटा पॉसिबल की तो राइट आंसर कोन हबो ना ऑप्शन ए द हाई रेनफॉल इन द नॉर्दर्न ओडिशा particularly during the monsoon is due to a combination of the factors primarily the regular monsoon pattern that is bringing the moisture from the Bay of Bengal clear C D मन इच्छा कोथि पय चलो Next question mate ko which of the following rivers in Odisha flows through the high annual rainfall region in northern Odisha कोटा हबा कहिलो question tricky ही थाए question त माने जति कि देखो कि आरे बहुत ही सिंपल आपण माने को पचारिबो कि who was the first chief minister of Odisha that is not simple as you are like experiencing or it is seeming like that is actually रे सेमति हुए नाही okay तो राइट आंसर मते के 20 नंबर कहिलो कोन हबो 20 नंबर बुढ़ा बड़ंग बैतरणी ब्राह्मणी गवर्नमेंट ऑप्शन अछि स्टिल द बुढ़ा बड़ंग हमें कोन कहि परबे माने एक्चुअली तो ऑल ऑफ दिस बट बुढ़ा बड़ंग ओरिजिन कोठु हेची मते को बुढ़ा बड़ंग ओरिजिन कोठु हेची बागघर पाखरु ना सिमिलपाल रु सो इट ओरिजिनेट इन द सिमिलपाल हिल तो मयूरभंज सहित आकु रिलेट करे दबो क्लियर बाकी बैतरणी आपण माने जानि संदी का सहित ना केउंझर सहित रिलेट कर दबो ब्राह्मणी को आपण माने कोडी ना राउरकेला ओके ता सहित रिलेट करे परिबो क्लियर मु भूलभाल लिखि दे रे भाई सुंदरगढ़ को मु झारसुगुडा सब बेले कंफ्यूज हे जे कोन पिला माने मते मॉक करिवे ना कि चलो so all three rivers listed flow through the northern part of Odisha which is a high annual rainfall region next मते को बैतरणी केउंझर नि लिखिसी आ कोन लिखि लिखि एठी केउंझर नि त लिखिसी चलो तो अगेन कहूची ऑल वन एग्जामिनेशन पई महात्मा आपनकर 1000 टका कमी जाईची हैला तो आपण मान जदी नेबा कथा केई पारिबे एंड एठी आपण माने मो कोड जदी यूज करूसंती SPG10 ताहाले आपण माने एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट पाइ पारिबे ठीक अछि SPG10 को माने नबो जदी नेबे ताहाले 10% डिस्काउंट मिलिसिबो नो मैटर आसा नै पारिबो तो
सिविल सर्विस भी आपण माने अधिकारी बैच लॉन्च हो जाइछि जोटा कि ओनली प्री पे नेबे जदी 1 ईयर वैलिडिटी 6999 अधिकारी प्री प्लस मेंस जदी नउसंती 1.5 ईयर वैलिडिटी 11999 एंड एनी मेंस और ऑप्शनल बैच आपण माने नउजन रेस्पेक्टिव प्राइस फॉर द मेंस इज 8999 एंड द ऑप्शनल इज 4999 ओके अंगनवाड़ी बैच तमे हो आसा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स डज रिसीव द हाईएस्ट नॉर्मल एनुअल रेनफॉल इन ओडिशा हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल हाईएस्ट नॉर्मल एनुअल रेनफॉल एथरे ही सबुतिक खेळ हे जिवो त माने ऊपर को आनिके बसिबो तो हाईएस्ट नॉर्मल एनुअल रेनफॉल कहिले सब बेले केउझर को जिवो कोउथि पई सुवर्णपुर हेला चंद्रशेखर कोउथि पई भूलभाल आंसर का कथा मने पड़ला क्लास मझरे तमरो आंसर भूल स्क्रीन तुमको ठीक देखा होची कि मोर कोन सडन ब्लर हे गेले अरे बी अच्छा चंद्रशेखर नॉर्मल बालेश्वर पाना कोन काहे की रे काहे की बालेश्वर कोथि पई बालेश्वर जति ताले सुवर्णपुर काई मारुथला बालेश्वर जति बी सुवर्णपुर काई मारुथला बालेश्वर पाखो केउझर मारलनी किछि भी घर केउझर ही अब बेसिकली रीजन कोथि पई इट इज अ हिली टोपोग्राफिक रीजन दैट एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर ओके तो मॉइस्चर लैडन आपनकर करे मानसून आपनकर आसी जाय विंड को कैरी करी के आने दैट कॉजिंग ओरोग्राफिक रेनफॉल ऑब्वियसली है ना चल next so normal annual rainfall data for the options provided in the cut is the Keonzhar next mate ko what is the main reason for the high annual rainfall in the coastal areas of Odisha what is the main reason for the high annual rainfall quick मो भाई किए तमरा भाई भी आसी गलेनी बाघ तमे कई तम टोटल क्लास 6 मास भीतर मु देखिनी का गुडे भौणी कहबार भाई भाई कहि केडी का गुडे हक कर पकेलानी से किंतु भौणी का कहबार मु देखि पालेनी सब क्लास रे जतिक झियो प्रेजेंट अछ समस्त बाघर भौणी आछटु हैला मैम इंग्लिश रे हबो एग्जाम ना ओडिया रे ऑब्वियसली इंग्लिश रे हबो इंग्लिश रे ही हबो हैला चलो तो हाई रेनफॉल कहिले साइक्लोन्स बाय मानसून विंड्स जियोग्राफिक ऑफ ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑप्शन को चूज करिवो so southwest monsoon winds which brings the bulk of rainfall cyclones and depressions originating in the bay of Bengal geographical location along the coast which enhances the moisture availability also next mate kuha which of the following is the horseshoe like area of the lower reaches of the Brahmani and Mahanadi with Bhadrak, Sukinda, Kendrapada and Cuttack on its order. Central Odisha, Delta region, Coastal Odisha or none of the above. The right answer आपण माने कोटा को मारुचंदी क्विकली कोंतु सब मते भाई डाकिबे हां समस्त तो भाई डाकिबे तुमको सब डाकरे विकास भाई समस्त डाक बाघ को समस्त विकास भाई डाक को तो राइट आंसर कौन कहूच नंबर 23 हाँ so right answer here is your option B so the horseshoe like area formed by the lower reaches of the Brahmani and the Mahanadi river including the Bhadrak, Sukinda, Kendrapada and Cuttack is known as the delta region of Odisha okay after that 25 mate kuha sorry 24 in which region of Odisha are the low annual rainfall areas primarily located jete bele low कहउजी that means high रे opposite को तो माने पळेबा right so northern Odisha तो हबनी western Odisha southern Odisha coastal Odisha कोटा हम कहि परिबा जल्दी सब भूल होची आंसर कोन करिबा रितेश practice makes a man perfect बुझिलो more and more practice you needed को राइट आंसर कौन हम ऑप्शन डी कोस्टल ओडिशा हां सबटु लीस्ट रेनफॉल आपनकर कोस्टल ओडिशा रे हुए हां ड्रॉट कंडीशन कोठी आसे की आपण मानकर ड्रॉट कंडीशन कोठी आसे केबीके रीजन कोठी अछि किछि त मुंड लगाओ केते केते चार्ट रे खाली झियो मानक पछरे मुंड लगेबो त माने कोन रिप्लाई देले हमें ताकू कोन रिप्लाई दबु सो दैट से माने राति सारा हम कथा भाबिबे एइथिरे त पळैला जीवनटा तमरो 6 मास त एइथिरे मु देखुची गलानी कौन गोटे को झियो मेसेज करला ताकू मो रिप्लाई रे कौन एमिति बन्ने चुने की लिखिबी जेमिति काली की से खाली मो मेसेज को वेट करथिबो
एइथिरे तमनको जीवन पळेइला कौन मु करिवि चलो next so the low annual rainfall areas in Odisha are primarily located in the western Odisha region specifically in the districts such as the Balangir Nuapa total अपन माने KVK region कहि पारे okay चलो next what is the annual rainfall threshold for the low annual rainfall region in Odisha honky human nature अच्छा मु भाबुଥିଲି खाली कुकुर बिलेंग संगे एटा हुए देखला लोक ह्यूमन मानक सहित भी एमती हुए अरे अरे मोर गोटे मिसकनसेप्ट थिला ना माने क्लियर कर देला अच्छा व्हाट इज द एनुअल रेनफॉल थ्रेशोल्ड फॉर द लो एनुअल रेनफॉल रीजन्स इन ओडिशा 50 centimeter or less 100 centimeter or less 120 centimeter or less or 200 centimeter less को मते p 100 centimeter or less अरे वाह बढ़िया आंसर दो छ तो आसो तो 120 centimeter or less को हमें कहि परबा that is the annual rainfall area are classified as the low annual rainfall region. These regions are typically located in the southeastern part and some interior districts like Koraput and Nabarangpur too. है ना? Next question मते कुआ which of the following rivers in Odisha flows through the low annual rainfall region of southeast Odisha? है विवेक दा कौन है अमित तुम्हें विवेक दा लिखिच आउ से स्माइल आउ हग रो गोटे सिंबल देछ मते देखा जाउची विवेक दे दैट मींस गोटे स्माइल आउ गोटे हग मते दे आसो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इन ओडिशा फ्लोस थ्रू द लो एनुअल रेनफॉल रीजन ऑफ साउथ ईस्ट ओडिशा वंशधारा ऋषिकुल्या बोथ ऑफ दिस और नॉन ऑफ दिस सेते बेले गवर्नमेंट ऑप्शन आपण माने कोन चूज करिवे ऑब्वियसली कोन बोथ ऑफ दिस को चूज करिया कथा त माने सी को ही चूज करछ बट कोथि पई जेते बेले आपण को साउथ ईस्ट कथा कहिछि ऋषिकुल्या नदी को भूलुछ कोथि पई साउथ ईस्ट कथा कहिछि ताहाल ऋषिकुल्या सहित भी त रिलेट करै परिबो ना हुआ मते the Rusicula river flows through the Ganjam district which is the part of the southern coastal region of Odisha and is known to be a completely low annual rainfall region. This river basin is often described as the facing water scarcity and etc. हैला चलो next मते को what is the reason for the low annual rainfall in the southeast Odisha region कहा को कहबा कहिलो quick what is the reason for the low annual rainfall in the southeast Odisha region quick all of the above अछि देखा गला hey all of the above अछि गला चलो so the southeast Odisha region receives a relatively low rainfall due to what not directly in the path of the cyclone that is the main reason rain shadow of the eastern ghat opposite rochi that can be a reason hilly terrain that's also a main reason clear chala next mate ko which of the following regions in Odisha is not a low annual rainfall region not a pacharichi low annual rainfall region that means central Odisha delta Odisha coastal Odisha or all of them तो central Odisha ला delta region हैला coastal हैला ये कोटा भी आपनकर कोन ना low rainfall ले हबनी low rainfall रे only western clear एठी भी अछि हाँ देखा गला चलो when does the winter season starts in Odisha Odisha रे winter केबे स्टार्ट हुए रे तमार केबे हुए नवंबर हुए ना डिसेंबर हुए दीटा को तो तमनको मिड ऑफ अक्टोबर भी अछि हे मिड ऑफ अक्टोबर भी ऑप्शन में अछि नवंबर को करूछ नवंबर तम आडे हेतिला अच्छा अच्छा आम आडे तो कोन मिड ऑफ अक्टोबर हो जाइतिला बट तम आडे कोन नवंबर हेछि बोली कहू छै हम राइट आंसर मार दोछि आ नागी आसो तो राइट आंसर कोन होछि ना नवंबर ओके but here the winter season in Odisha typically starts in November while cooler weather can begins in the mid of October okay next mate ko what is the range of the temperature in the coastal areas of Odisha during the winter season आपनकर coastal आजिकल ता कहि होबनी टेम्परेचर देबे 2 days बिफोर मु ट्राई माने देखितिली बोते मु सोई पालेनी बेड माने बिलीव करबनी तळे गोटे ब्लैंकेट ऊपर गोटे ब्लैंकेट तापरे गोटे लेगिंग्स पैंट तापरे गोटे फुल पैंट माने 4-5 पिंधी की इतरे ब्लैंकेट घोड़े के सोईथिली मतलब ना इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट बोते दरकार हवा हम सर्वाइव करिवि था सकाळ को उठी परिबि था एमिति फील होतला अब कोन ए डिग्री देखि कि मते किछि लागुनी 8 डिग्री हे जाइतला लिटरली 8 डिग्री थिला भुवनेश्वर ना 8 थिला सोनल
8 थिला सो राइट आंसर एठी कोन होजी को व्हाट इज द रेंज ऑफ टेंपरेचर इन द कोस्टल एरियाज ऑफ ओडिशा ड्यूरिंग द विंटर सीजन 10 डिग्री टू 5 डिग्री 25 टू 18 5 टू 0 30 टू 28 तो माने टिके मिस्टेक करिवो समस्त कोन मारछ ऑप्शन बी मारुछ ताहले चल जिवो चलो सो काहे की तो माने बी मारिलो 25 to 18 degree is there any specific reason because आपनकर जेतेबेले हमें देखुचे कोस्टल रीजन कथा कहूची बहुत जल्दी आपनकर शीत भी आसे एंड शीत जाय भी जल्दी तो आपनकर ह्यूमिडिटी सब बेले बैलेंस कंडीशन एठी थाए 23 नंबर एक्सप्लेन करंतु कोन थिला 23 नंबर माउस तो 40 ने स्क्रॉल करिवि माउस टा ही जाइछि आज पूरा सत्यानाश हे जाइछि मोर माउस देखिबा चला चला चलो कोनटा थिला 23 नंबर टा गोटे मिनिट 23 number yes so which of the following is the hot soil like area of the lower reaches of the Brahmani and the Mahanadi with Bhadrak Sukinda etc देखो महा जते बेले आपन को कहूची राइट आंसर आपन कोन कहितिला डेल्टा रीजन हो ओके काहे की डेल्टा रीजन तो यस डेल्टा रीजन ही हो काहे की कारण देखंतु महानदी हेला ब्राह्मणी बैतरणी सब आपन मानकर कोन तीनटा नदी कथा जे कहिची से माने हेक्सा डेल्टाइक एटी करना एटी ट्राई डेल्टाइक करछंती दैट फॉर्म ए वेरी वास्ट कोन ना गोटे आर्क्विट हम कहि परिबा आर्क्विट मींस कोन गोटे बो शेप्ड हम कहूची आर्क्विट मींस आपन कर एटी गोटे बो शेप्ड होची जाको हम हॉर्स शू लाइक शेप भी कहि परिबा दैट मींस आपन कर डेल्टा टा से शेप रो फॉर्म होची और द हॉर्स शेप्ड अलुवियल प्लेन भी हम ताको कहूची हॉर्स शू शेप्ड कहूची ते बेले और दस ओनली हॉर्स शू लाइक होची चिल्लिका सॉरी अंशुपाल लेक कथा तमन को माइंड को बार-बार आसी जाउथो ओके बीडीके आल्सो कम्स अंडर कोस्टल प्लेन्स मैम भद्रक अरे बाबा ठीक अछि बट क्वेश्चंस तो देखो कोन कहूची केंद्रापड़ा भी आपन राशि बनि के सेंती हेले बट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हॉर्स लाइक एरिया ऑफ द लोअर रीचेस ऑफ द ब्राह्मणी एंड द महानदी एंड भद्रक with भद्रक सुकिंदा केंद्रापड़ा एंड कटक इन इट्स ऑर्डर यदि एई ऑर्डर रे हमें देखुचे कोन भद्रक सुकिंदा केंद्रापड़ा कटक एई अंडर रे मींस आपनकर भद्रक आडे फ्लो करके तळकु आसो so this area is characterized by interlacing हमें कहि परिबा the network of distribution that means river that branch off हे कि आपनकर रहुची and एटा आपनकर most fertile part रे belong करिवो that's why हमें ताको delta region रे belong करूचे कारण एठी आपनकर ट्राई डेल्टा कोन महानदी ब्राह्मणी and आपनकर रहुची बडे गला रे ब्राह्मणी महानदी छडा ब्राह्मणी महानदी आपनकर ट्राई डेल्टा फॉर्म करूछन जो जागा रे मिसुचंदी आपनकर एठी ट्राई डेल्टा फॉर्म करूछन क्लियर एति कि जिंसा मन रखिता बैतरणी भी आपनकर एठी आसी जिवो एक्चुअली बैतरणी भी एथरे ऐड हेसिबो तो सब मिसी कि ट्राई डेल्टा फॉर्म करूछन एंड लोअर रीजन जेतु कहिची त आपन माने लोअर पार्ट को जिवे ना कोस्टल पार्ट कहिची माने आपन माने पूरा ऊपर एरिया जदी नॉर्दर्न कथा कहितांदा ताहाले आपन माने रहिथांते विवेक बुझीस जेते बेले एरिया रो लोअर पार्ट कहूची नदीटा फ्लो हे कि केते तळु को जागा रे आसी कि अलगा नदी सहित मिसुची सेटा को हमें रिलेट करू हैला इंटरलेंसिंग नेटवर्क सहित जीवा व्हाट विवेक कहउतली सॉरी कार क्वेश्चन थिला चंद्रशेखर हां मैं लिखे ओके चलो कोठी थिले पुणी मझी को आसिले पुणी पछकु जाउचे कथा कोन सॉरी जाइथिला कि सॉरी जाइथिला हे कोन आउ करिया आसो त महापेट अगेन कहू जी 1000 टका कमी जाइची 3999 नै परिबे एंड सेथिरे ऑल वन डे एग्जामिनेशन आपनकर कवर ऑफ हेसी देन अधिकारी बैच पे आपण मान नै परिबे जोटा कि ओनली प्री जदी नो चंदी ताले 1 ईयर वैलिडिटी 6999 एंड जदी अधिकारी पी प्लस मेंस नो चंदी 1.5 ईयर वैलिडिटी सहित 11999 ओके
Thank you so much. Have a good night. Take care of yourself. But first of all, do prioritize your parents. This would be your first priority. No one else in the world. Ma'am, आउ किछि question? ये बाबा तमे मंटू दास 1 hour रे केते questions 1 hour तो 30 questions हैला बट स्टार्टिंग रे आपण मानको जो क्लासिफिकेशन कहली दैट इज वेरी इंपोर्टेंट एग्जाम रे क्लासिफिकेशन निहाती गोटे क्वेश्चन आसीबो मार्क माय वर्ड्स ताकू केमिति आपण माने मन रखिबे दैट्स अप टू यू हैला आउ तो मो पाखरे ग्राइंडर अछि बट आपण माने नाहांती पाखरे कि मु एटा सब ग्राइंडिंग करके पियाइ दे हैला दैट्स द ओनली लाइक ऑप्शन लेफ्ट आउट बट ताकू छाडले आपण माने पढी के चेष्टा करो चलो थैंक यू बाय बाय एंड माउस मोर खराब हो जाइए से मत सैड फील हो चलो थैंक यू गाइज बाय तो मैंने एक्चुअली लेफ्ट है जा मो माउस जेहेतु खराब हो मुझे काढ़ाटा टे टाइम लगे रे कितने डेट आज 12 तारीख